Hello students, I am here with another video from the chapter of class 7th Science NCERT book. The name of the chapter is chapter number 13th, Motion and Time. So children, as you all know that we have completed few topics in this chapter. That is, we studied about the motion, its introduction, how we can understand that what kinds of motion we are talking about. Then we have also seen what types of motions are there based upon the distance, based upon the time taken. We can classify them as the slow motion and the fast motion, and then after that we studied about the speed also. That speed is a ratio, it is a comparison between the distance and the time. So distance और time के हिसाब से अगर हमें मोशन को क्लासिफाई करना है तो we have classified them as whenever the equal distance is being traveled in equal interval of time, we can say that it is a uniform motion. And when the distance which is traveled, the distance when unequal distance is traveled between unequal interval of time, it is said as the non-uniform motion. Okay, now after that we saw about the different types of the speeds, that is uniform speed and non-uniform speed. Even the uniform motion and non-uniform motion is equivalent to the uniform speed and non-uniform speed. Okay, now after that we have seen how to plot the distance time graph. Okay, so distance time graph. Now if we talk about this distance time graph, we can calculate that if you know the distance and if you know the time, then we can easily calculate the speed which is being discussed about, how to calculate the speed, how to know that whether the given speed is known to be as the uniform speed or non-uniform speed. Okay? यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो उसके बाद मैंने कुछ डिस्कशन ये किया था कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको दे रहे हैं जहाँ पे आप यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बता सके. ओके, सो हियर यू सी दैट व्हेनेवर वी आर प्लॉटिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वी विल टेक टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस. ठीक है, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस. Now if you see that we get a straight line in this manner, this is said to be as the uniform, this motion is said to be as uniform motion. And what about the speed? It is known to be as the uniform speed. ठीक है, uniform speed भी हम बोलते हैं इसको. अब इसके बाद अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखें कि अगर हमें कोई और शेप मिलता है, तब अगर कोई zigzag शेप मिलता है, then the same time is plotted on the x axis, we take distance on the y axis, and when we are going to plot a graph and if we get a zigzag line which is not in a straight line manner, then this type of motion is said to be as non-uniform motion. ठीक है, it is said to be as non-uniform motion. Thirdly, if you are going to get a graph where again the time is on x axis and distance is on y axis, and we get a straight line but that is parallel to time axis. What about this point? What about this type of graph? We can say that this type of graph where you can understand that the time, यहाँ पे जो भी टाइम था, मान लीजिए 1 सेकेंड था, यहाँ 2 सेकेंड था, यहाँ 3 सेकेंड था, तो 1 सेकेंड पे अगर इधर 1 2 3 4 ऐसे अगर हम डिस्टेंस के मीटर्स में मान लेते हैं, तो वी कैन सी दैट फॉर 1 मिनट, फॉर 1 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड वाज 1. इधर भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है? 3 मीटर्स. 2 मिनट्स पे भी 3 मीटर्स, 3 मिनट्स पे भी 3 मीटर्स, ओके, 3 सेकेंड्स पे भी 3 मीटर्स. नाउ अगर आप ऐसे कंटिन्यू करते हैं, वी विल गेट अ straight line but that is parallel to time axis. Now what does this signify? What does this tell? This tells us about that the object is not moving, the object is standing at a place, it is at rest. Okay, so what kind of motion is it? The object is, this is at rest, the body is at rest. Okay, the body is at rest.
So we can say that whenever we talk about these kinds of graphs, that is distance time graph, we can see that these three pictures could show us that what kind of distance time graph we can get. We can get a straight line graph, which is signifying that this kind of motion is known to be as a uniform motion, and the speed is said to be as a uniform speed. Okay, we have seen the data also, and then we have drawn the graph, and still we were getting the same type of the this line. ठीक है? Similarly, when we get the zigzag line, वो zigzag किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. Okay, it could be any shape. If we get, it is the shape where the shape of the line is not in a straight line, but it is in a form of a curve. We get a curved line, then that kind of motion is said to be as non-uniform motion. The speed is non-uniform speed. ठीक है? इसी तरह से अगर हम बॉडी इज एट रेस्ट की बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमें जो लाइन मिलेगी दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, बट दैट वुड बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ओके, दैट वुड बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ओके, now with this we have seen the different types of the distance time graph. Even you can calculate the speed at a given instant of time. Okay, so we can calculate the speed, calculation of speed at an instant of time. ठीक है, at an instant of time पे हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो विल बी गेटिंग द पर्टिकुलर स्पीड एज वेल. ओके, कैसे हमें कैलकुलेट करना होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं 2 सेकेंड्स पर ऑब्जेक्ट आपका किधर पहुंचा था, 2 सेकेंड्स पर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 सेकेंड्स पर ऑब्जेक्ट किधर था, जो स्पीड आएगी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, टाइम कितना चला, उसके हिसाब से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू कैन गेट द स्पीड एज वेल. ठीक है, तो स्पीड अगर यूनिफॉर्म आएगी तो इट विल बी द डिफरेंस वुड बी इक्वल. लेकिन अगर स्पीड डिफरेंट आएगी तो इसका मतलब है कि जो कैलकुलेटेड स्पीड है दैट वुड बी फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, now we move on to the next point. We move on to the next topic of this chapter. We can calculate the instantaneous speed, I have told. So with this you can see I have told you about how to plot the distance time graph, how to plot the uniform speed graph. You can see the non-uniform speed graph is also there. ठीक है, बॉडी एट रेस्ट अगर है तब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तब भी आप आराम से एक ग्राफ बना सकते हैं. ओके, अब यहाँ नेक्स्ट थिंग आती है कि इस चैप्टर के लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन है, एंड देन वी हैव सीन व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज बीइंग गिवन एज इन दिस चैप्टर. यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए और बॉडी एट रेस्ट के लिए आपको एक एक ग्राफ बना करके यू हैव टू शो मी इन योर क्लास. ओके, now you people are coming to the school, so you can show me your work in the school. Fine. Now next thing is that the keywords of this chapter. The keywords of the chapter is the first chapter. The first keyword. First keyword is bar graph. Now, what do you understand by the bar graph? Okay, how will you define this bar graph? Bar graph is a kind of a graph which is being represented because of the bars which is being made. Rectangular boxes are parallelly they are being made according to the data, and that is in the form of the that shows the graph in the form of the block manner. Okay, so here the graph which is drawn using rectangular blocks or bars are known as bar graph. Okay, so the data is represented in the form of the bars. The data of the graph
represented in the form of bars. ठीक है, जैसा आपने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है. Okay, so these are known as the bar graph. Fine. Now the next thing is that here you can see that the data which is being drawn is in the form of the bars. तो ये जो आप ऐसे blocks draw कर रहे हैं rectangular, these are the bars. Okay, so they could be known as the bar. Got it? The second is the oscillation. Second is oscillation. Oscillation means the to and fro movement of vibrating or oscillating object. To and fro movement of the oscillating object is known as the oscillation. ठीक है, it is known as oscillation. Next is time period. What do you understand by time period? It is again very simple. Again, it is a very simple definition. The total time taken by an object the total time taken by an object to complete one oscillation. Is known as time period. ठीक है, this is known as time period. Okay, now we move on to the next point, that is graph. What do you understand by graph? How can you define this word graph? Graph means it is the representation. It is the representation of data. It is the representation of data on the. It is the representation of data in between the axis. ठीक है, in between the axis, or you can say axis को अगर बोलना है तो x es भी लिख सकते हैं. Between x axis and y axis, so it could be represented in the form of the manner by which you can plot the readings on x axis and y axis, and that could make a drawing, and that line or bars that could be set as the graph. Okay, it is a representation of data in between the axis and between the x axis and y axis. अभी आपने दो ही पढ़ी हुई है यहाँ पे, बाकी अगर दो एक्सेस के अलावा भी और एक्सेस होती हैं, but still you have to say that it is drawn in between the axis and it is a representation using our data. The graph is made using the data. Even अगर आप इतना भी लिखते हैं, representation of data in between two observations, in between two or more observation. ठीक है, कम से कम दो ऑब्जर्वेशंस तो चाहिए ही ना, एक एक्स एक्सिस के लिए चाहिए हमें और एक वाई एक्सिस के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए. ठीक है, अब चाहे इसमें आप एक लाइन ग्राफ बनाइए, चाहे आप इसमें बार ग्राफ बनाइए. ओके, वी कैन, देयर आर डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ द ग्राफ. पाई चार्ट्स होते हैं. तो ग्राफ्स की अगर हम बात करते हैं तो चार्ट्स एंड ग्राफ्स में हम हमेशा एक्स एक्सिस का यूज करते हैं इन बिटवीन टू और मोर ऑब्जर्वेशन in the axis. Okay, that is known as the graph. And the next is about
The next keyword is simple pendulum. Fifth word is simple pendulum. Now, what do you understand by simple pendulum? Simple pendulum means it is a device, it is an oscillating device which is going to give us, okay, it is an oscillating device, or simple pendulum means it is the device which shows oscillation, and yes, it is the device which shows or periodic motion, which shows periodic motion, or you can say which shows which is going to show us oscillatory motion. Okay, this is known as pendulum, simple pendulum. It consists of a bob hanging, or which is suspended with the help of the thread. Suspended with the help of a thread. Even you can draw the diagram as well, which is this kind of graph. Is this kind of object is known as the simple pendulum, which is showing the periodic motion. Okay, now the next question, the next point is about yes, this is the next point is about the uniform motion. How will you define uniform motion? Uniform motion is a motion where the equal distance is being covered in equal interval of time. This is shown by an object which is covering equal distance in equal interval of time. Okay, for example, if a car is moving on an empty road, you are walking in a park with a constant speed. Okay, so that is said to be as uniform motion. The motion in which the object is moving by covering equal distance in equal interval of time. ठीक है? By covering equal distance in equal interval of time. Got it? So what is uniform motion? Uniform motion is an object. It is the motion in which the object is moving with equal distance covered in equal interval of time. Okay, so this is known as the uniform motion. Okay, you can write down the example like when the equal distance is traveled by a car on an empty road, it is covering the equal distance when the car is running on an empty road, or you are walking in a park, or you can give various examples. जो व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, जब वो इक्विडिस्टेंट ट्रैवल करेगा, एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन वाला ऑब्जेक्ट मानेंगे. ओके, द नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. How can you say that? How will you
define this non-uniform motion. Non-uniform motion means the motion in which the object moves or travels unequal distance in equal interval of time. ठीक है, और इसे वी कैन सिंपली राइट डाउन, एक और डेफिनेशन बन सकती है, when the object moves distance or time in unequal manner, either distance or time in unequal manner. Okay, unequal manner, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो टाइम हो, दोनों में से कोई भी अगर एक अनइक्वल है देन दैट काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एग्जांपल, बस अराइविंग near to the bus stop. ठीक है, और a car moving on a very busy road. तो ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी बिजी रोड पर बहुत फास्ट गाड़ी नहीं चला सकते हैं. आप बस को भी स्टॉप में बहुत रश करके नहीं ला सकते हैं. ठीक है, तो अभी क्या है, ऐसे कंडीशंस में यू हैव टू स्लो डाउन द स्पीड. सो व्हाट हैपेंस, समटाइम यू हैव टू अप्लाई ब्रेक, समटाइम यू हैव टू स्टैंड, समटाइम यू हैव टू वॉक, समटाइम यू आई मीन दैट व्हीकल हैज टू मूव. तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, या फिर जब अगर आप भी भीड़ में चलते हैं तो आप एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल सकते हैं. अगर आपके सामने कोई इंसान आ रहा है या जा रहा है आपके पास से, तो यू आर नॉट गोइंग टू रन एंड रश थ्रू दैट पर्टिकुलर रोड. यू हैव टू स्लो डाउन योर speed. And if you are slowing down your speed, it means that first you were traveling at a very constant speed and now your speed has been lowered. तो अब क्या होगा, ये जो स्पीड है वो कम होती जाएगी और बस क्या होगी, वो बहुत ऑब्जेक्ट है, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बस हो, चाहे कोई व्हीकल हो, चाहे बाइसिकल हो, चाहे आप खुद हो जो आप चल रहे हैं किसी भी भीड़ वाली रोड पर, वहाँ आप दौड़ करके नहीं चल सकते हैं. जो सिमिलर वे you cannot bring your vehicle in a very faster speed when you are arriving at your stop. Okay, or the train arriving at station, sometime it moves faster, sometime it moves very slowly, sometime it stands for some time. ठीक है, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल विद द डेफिनेशन. ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है स्पीड. ओके, दो क्वेश्चन और बचे, दिस इज स्पीड, दिस इज 7 पॉइंट. ओके, दिस इज 8, not 7. Speed, what is speed? Speed, it is the distance traveled per unit time. Distance traveled per unit time is known as the speed. Okay, what do you mean by the speed? Speed is a quantity which tells us that what amount of distance is being traveled in per unit of time. This is known as the speed. Okay, now what could be the next definition? That is unit of time. Unit of time. The SI unit of time is seconds. Is second. ठीक है, so second is
the representation, it is a representation of time taken to complete the motion. Time taken to complete the motion. ठीक है? So this is about the unit of time. Now we move on to the next topic that is given in your book, which is what we have learned. It is just a kind of a revision sort of thing. एक्चुअली इतने सारे चैप्टर्स, इस चैप्टर के इतने सारे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको आई थिंक अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट स्टिल वी कैन ब्रश अप द चैप्टर एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस. फॉर दैट वी हैव वन ब्लू बॉक्स गिवन ओवर देयर इन योर एनसीईआरटी बुक एट द लास्ट यू कैन सी. एंड इसमें आप देख सकते हैं कि द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज इट्स स्पीड. ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी. व्हाट इज स्पीड? इट इज अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट ऑफ time. Okay, so what kind of how will you express the speed? Speed is equal to distance traveled per unit of time. Distance traveled per unit of time, its unit is meter per second. क्योंकि distance जो होता है वो मीटर में मेजर किया जाता है, टाइम को की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स होती है. तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? SI unit of speed is meter per second. Okay, we can calculate this meter per second. That is the speed of any vehicle. Okay. Now the second point is when the object helps us to decide whether one is moving faster. The thing which is going to help us to decide whether the object is moving faster or slower, then that kind of that particular quantity is said to be as the speed. ठीक है, ये भी बता सकते हैं आप स्पीड में कि स्पीड अगर किसी ऑब्जेक्ट की बहुत फास्ट है या स्लो है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई मोशन बहुत फास्ट है, कोई मोशन बहुत स्लो है? वी कैन सी दैट द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज फास्टर और स्लोअर based upon the speed of that particular object. Okay, if the object is moving very faster, it means it is following a very fast speed, it is having a very fast speed. And if the object is moving in a very slower motion, then that is known as the slower speed, or it is known as slow speed. Okay, now we move on to the next point, that is the speed of an object is the distance traveled divided by the time taken to cover that particular distance. Its basic unit is meter per second, or we can write it as the manner meter per second. अभी just थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला भी लिखा. Speed is equal to distance traveled upon time taken, which is meter per second. Okay. Now periodic events are usually measured they are going to measure the time, or it is the measurement of time. Or periodic events are used for the measurement of time. In the olden days, we have seen when there were no clocks, there were no watches. The distance were made. The time was measured by using the events. कैसे events? जैसे सनराइज कब हो रहा है, नेक्स्ट सनराइज कब हो रहा है, एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का जितना समय था, दैट वाज नोन एज वन डे. इसी तरह से एक सनराइज और सनसेट के बीच में जितना समय था, दैट वाज द डे टाइम. फिर जो मून राइज से नेक्स्ट सनराइज तक अगर देखते थे तो दैट वाज अबाउट द नाइट टाइम. तो ऐसे करके डिसाइड किया जाता था कि अप्रॉक्सीमेटली इस समय टाइम कितना हो रहा है. नेक्स्ट थोड़ा सा और एडवांस हुआ. We saw that the time was measured using different devices, and yes, of course, we need to see the time measuring devices of the ancient times. तो इधर में ancient times में कई सारे ऐसे devices यूज किए जाते थे जो time measuring devices के नाम से हम जानते थे, जिनको जैसे measurement of time. एंशियंट टाइम्स में क्या किया जाता था? जो भी मेजर करते थे टाइम, हम सन डायल की हेल्प से करते थे, मून डायल की हेल्प से करते थे. ठीक है, मून डायल की हेल्प से करते थे टाइम मेजर. और नेक्स्ट था जो कि हम सन डायल के साथ मून डायल भी यूज कर सकते थे, और सैंड क्लॉक, वॉल क्लॉक, वाटर क्लॉक,
वाटर क्लॉक्स हम मेजर करते थे, ठीक है। तो ये सारे डिवाइसेस थे कुछ, मैंने इसकी वर्किंग भी आपको पहले समझाई है प्रैक्टिकल के क्लासेस में। इवन यू कैन इवन रिवाइज दोज थिंग्स, एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क मी इन योर ऑनलाइन class. Okay, so these were the topics which were to be discussed, and today in class and after that I'll be discussing some more points, and then we'll be going on to the exercises of this chapter. Till then you can read the book, and even if you have you can gather your doubts and ask me in your online class. So this was all about today's video, children. I will be meeting you all in the next class.